Yes. Yes. Okay. Garima starting. Yeah. So today we are going to continue what we have done in our previous class, right? Uh, so let me share my screen to you all, and you need to tell that is it visible or not. Okay. Yeah. So let me share it. Are you all able to see or not? Please tell fastly. Yes, please tell. Is it visible? Um, 1 second. Let me remove the captions. Okay. Yeah. Now I'm sharing my screen. Yeah. Now you tell it. Okay. Now is it visible? Yeah. Okay. Okay. Serena. Okay. Yeah. So let us just start. So first of all, I want to say that here in previous section we have studied about it, that how, like, what are rocks, what mineraloids, chemical composition, chemical ores. Also, I have told you about it. Have I told you all about this, that why all ores are minerals but all minerals are not ores? I have told you now that why it is so. Yes or no? I have told you that why all ores are minerals but all minerals are not ores. Okay. And even I have told you all about iron ore, iron mineral. Okay. And then we have studied about what are minerals. Okay. So I have firstly prepared some quizzes for you all. Okay. We have also discussed about commercial use for why it is mined in only those regions where it occurs as ores. You know now that why it is mined, because ore contains the maximum minerals, and that is why they are mined in only those regions, so that we can get out the maximum of the minerals. Okay. Okay. Now we have also learned about extraction of minerals, right? Okay. Now we are and also characteristics of minerals. We have learned about difference between ores and minerals, and even metallic versus non-metallic minerals. ठीक है? अभी हम लोगों ने metallic minerals का करा था कि metallic minerals की properties क्या है and इनके types क्या होते हैं, right? Okay. So now here's quiz time. So first question of the quiz is that why all ores are minerals but all minerals are not ores? Why so? Okay. Why? Why all minerals are ores? Why all ores are minerals but all minerals are not ores? You need to tell the answer to this question. आप इसको comment box में लिख सकते हैं. I will tell the answer later on, and will also tell कि किसका सही है. So you can start answering this one. Okay. Okay. So now this is the very first question of our today's session, and the second question that we are having is state any one property of mixture, and the third is this one, and fourth is this one. आपको chemical composition means rocks or minerals what, and आपको chemical composition का आपको 1 या 2 words में बताना है कि what do we mean by chemical composition. I have told you guys about chemical composition कि वो होता क्या है. आपको बताना है कि chemical composition 1 or 2 words में what it actually means. Okay. Yeah. So this is your third question. Yeah. And the fourth is how many types of minerals. I'm asking how many types of minerals are there. Not how many types of metallic minerals, या फिर how many types of non-metallic. I've asked that how many types. You need to answer these all questions, so you can start answering. Till the time I will discuss this at the end of this section. Okay. Yeah. So I'm going to discuss this at the end of the session. So now let's just begin. Yeah. Yeah. So now you can start answering, whoever knows. Yeah. And if you don't know, then I will tell that किस किस का सही है. Okay.
Yeah. So now we come up to types of rock. We are going to know about different types of rocks. Okay. So the first type is igneous. Igneous is formed when lava or magma cools. क्या आपको lava और magma में difference पता है? Do you know the difference between lava and magma? Yes or no? Yes or no? Do you know the difference between lava and magma? If yes, so tell me the difference. Yes, please tell difference between lava and magma. Yes, Saksham, what do you mean? Yes, please focus that. Do you know the difference between lava or magma? Yes or no? If yes, so please tell me what is the difference between lava and magma. Yes, please tell. Okay, India King is saying lava out and magma inside. Okay. What about others? Others don't know just, or they are not aware of it. Leave it. I will tell the difference. So in this also, can you guys see that lava is actually flowing outside, right? Saksham is saying that magma is inside the volcano and lava is outside on the earth's surface. Okay. Yeah, so Saksham and India King, you both are correct. It is correct that lava flows outside and it flows on the earth's surface. You can see that this is lava which is flowing outside the earth's surface, and this interior one is magma. Okay, got it. Yeah, so this is actually the difference between lava and magma. Yeah. So igneous is formed when lava or magma cools. Suppose when lava, cools. So actually, you know that they are actually interior. Lava is actually exterior and magma is interior, right? So when they cool, so they form rocks, right? So when they cool, so they form the rocks. Okay. So they are under the category of igneous rocks. And igneous rocks is also divided into three parts. What are the parts? First is intrusive, second is extrusive, and third is plutonic. Abhi I will tell you a very easy funda in which you can quickly learn that what is this intrusive, what is extrusive, and what is plutonic. अभी इंट्रूसिव से आपको ये पता चल रहा है कि इंटीरियर है, राइट? अभी इंटीरियर, अभी सक्षम ने भी बताया था कि मैग्मा इज इनसाइड, यानी कि मैग्मा इंटीरियर है. सो व्हेन मैग्मा कूल्स, this comes under the category of intrusive igneous rock. And when lava cools, yani ki when exterior part, when the outside part cools, so that comes under the category of extrusive igneous rocks, right? Yes or no? And when plutonic, now comes the plutonic. Plutonic is just the another name of extrusive rocks, but its time period is more. Means to form the plutonic rocks, the time period that is required is very much. Very, very, very much. Okay? So intrusive means the magma cool होता है या interior का part cool होता है, and extrusive means of outside यानी कि lava or exterior यानी कि as you know interior is inside and exterior is outside, right? So इंटीरियर जब मैग्मा कूल होता है तो वो इंट्रूसिव हो जाती है, एंड जब बाहर का एक्सटीरियर पार्ट कूल होता है तो वो एक्सट्रूसिव हो जाती है. एंड प्लूटोनिक इज जस्ट द अनदर नेम ऑफ एक्सट्रूसिव, बट इसका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है. ओके, गॉट इट? यस और नो? Yeah, so India King has got it. Okay. So now let us come on the next part. So now we have learned about igneous, that when lava or magma cools. So this is lava.
This one is lava, okay? Because it is actually flowing outside the earth surface. It is lava. Okay, this is extrusive igneous rock. Okay, and yeah, please start commenting about the answers. Okay, that I have told you not in previous class that why all ores are minerals, but all minerals are not ores. So you need to tell the answer. I will check and tell at the end of the session. And the second is that state any one property of mineral that what जैसे ores की properties होती है that they are deposition forms of minerals, है ना? And they are actually have that they do not have definite chemical composition. So you need to state the property of mineral, any one property. Third is chemical composition means in one or two words. And fourth is how many types of minerals are there and you need to name them. Okay, yeah, so start answering. So, yeah, so now we come up to the second type of rock which is actually sedimentary rocks, right? So first is igneous. We have learnt about igneous rocks and now sedimentary rocks. Okay, now we are going to learn about this sedimentary rocks. Sedimentary, I think you might have learned before also. आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना? That sedimentary is when sediment deposits. Sedimentary rocks are formed when minerals and other organic substances are deposited. यानी organic means जो natural substances जैसे air यानी कि खूब सारे waste products, dump products or you can say leaves, right? So they are deposited at the earth surface. यानी कि earth surface पे it is formed due to the process of sedimentation. Now जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से बनती है. ओके, सो सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से बनती है, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस का नाम है, ओके, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक साथ आते हैं and they actually settle down. They form stack. They are actually stacked up and they settle down at the bottom of earth surface. यानी कि at the earth surface. So ये जो sedimentation होता है ये प्रोसेस का नाम है जो कि पार्टिकल्स को एक प्लेस पे सेटल कर देता है. ओके, it causes years to make this rock क्योंकि obviously it requires them to because obvious है because when the sediment will settle down they will come. Okay, suppose rivers में से sediment आया, air में से sediment आया, okay, and they actually form stacked up. They are actually stacked up. Okay, now it requires कि अब over time जब तक बहुत टाइम होगा, जब उसको कई सारे साल लग जाएंगे, कई सारे टाइम निकल जाएगा, तब जाके वो एक साथ मीन्स एक साथ वो सेटल होंगे, है ना? और तब वो जाके वो अच्छे से डिपोजिट होंगे, वरना वो बस ऐसे ही सेटल हो जाएंगे, लेकिन वो डिपोजिट होंगे ओवर टाइम, यानी कि कई साल बाद वो सेटल होंगे, राइट? या सो दिस इज व्हाट this means. Okay, so sedimentary rocks, have you got it or not? Have you got this thing or not? Have you got it? This one. Yes, please tell. Because this one is actually very easy and it is very understandable. Because it is not this much typical. Okay, it is just that the sediment is actually settled down. Okay, I will show you the picture of it. See, now we are studying about sedimentary rocks, right? So sedimentary rocks में see materials washed into the sea or blown in by wind, right? Let me take a little light color so that you can see what I am saying. Yeah. So material washed into the sea or blown in by wind. See, the
the small pebbles are coming. See, this is actually underground. See, this particular portion is underground. See, till here there is land, there are water, there are fishes. Okay, dead plants and animal materials die. जब they actually die, जब वो मर जाते हैं, okay, so they also form layers of sediment. So this way the layers of different sediment एक साथ सेडिमेंट हम कहते हैं हम सेडिमेंट कब कहते हैं, जब वो डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एक्चुअली में कलेक्टिवली हम लोग उसको सेडिमेंट कहते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एयर, पेबल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट. या सो जो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट है, ये ओवर टाइम ये लेयर्स ऑफ सेडिमेंट रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. ओके, ओवर टाइम ये लेयर्स ऑफ सेडिमेंट रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट. या सो नाउ हैव यू गॉट इट? Yes or no? Have you got this one or not? What is actually sediment, and when these sediment actually settle down and form layers and then over time it turns into the rock, then this is sedimentary rock. Hello? Yeah, so this is what the sedimentary rocks mean. Yeah, so now let's move. See, so this is showing that over time these layers press over one another to form sedimentary rock. यानी कि एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, they actually stacked up, and obviously जब वो stack हो रहे, सपोज आपने अपने 2 hands लिया, आपने एक हैंड को दूसरा हैंड के ऊपर रखा है. ओके, एक पाम को दूसरे हैंड के ऊपर रखा है. So obviously the bottom palm will get some pressure from the above palm, right or not? तो same way जो above layers होती है वो नीचे वाली layers को pressure देती है, right? They actually provide pressure to them, and that is why वो एक साथ कई सालों बाद वो rocks में convert हो जाती है. Okay? Yeah. So now we come up to metamorphic rocks. Okay, so अभी हम लोगों ने पढ़ा था that there are 3 types of rock. First is igneous rock. Okay, igneous rock के भी 3 types है: intrusive, extrusive and plutonic. Okay. The second rock that we are having is sedimentary rocks, and the third rock that we are having is metamorphic rock. This rock is actually having a relation with sedimentary rocks. How? That I am going to tell you. Okay. Yeah. So now you can see that the metamorphic rocks होती है वो form होती है when gets pressure and heat. अब जो प्रेशर है वो तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेशर तो अबव सेडिमेंट्री, मतलब जैसे सेडिमेंट है. अब सपोज नीचे वाली जो रॉक्स बन गए, लेकिन ऊपर वाला तो अभी भी लेयर्स बनी रही होंगी ना. ऑब्वियसली सेडिमेंट आ रहा है, सो दे सेटल डाउन and they will form layers and they will actually provide the pressure to the bottom layers, right? Bottom layers को obviously upper वाली layers होंगी जो bottom वाली layer को pressure provide करेगी, right? So यानी कि जो सेडिमेंट लेयर्स होती है, जो ऊपर वाली होती है वो जो बॉटम वाली लेयर्स को प्रेशर प्रोवाइड करती है. ओके, एंड सो इट मीन दैट यहाँ ऊपर वाली साइड से प्रेशर आता है, एंड एज यू नो एक्सक्यूज मी, या सो एज यू नो दैट हमारे अर्थ के बॉटम में क्या है, हमारे अर्थ के बॉटम में हीट है. ओके, या मैग्मा है, हीट है, राइट? बिल्कुल इंटीरियर में, राइट? सो नीचे सब हीट आ रही है एंड ऊपर से प्रेशर आ रहा है. सो यानी कि जो बीच में जो यहाँ पे जो स्पेस होती है वो फॉर्म हो जाती है. वो कब फॉर्म होती है? दिस वन, कैन यू से दिस ग्रे वन? ये तब फॉर्म होती है जब नीचे से प्रेशर आ रहा हो, सॉरी नीचे से हीट आ रही हो एंड ऊपर से प्रेशर आ रहा हो. ओके, सो बीच
this metamorphic rock are formed. Okay Alina, thank you. Yeah, so मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होती है जब ऊपर से सेडिमेंट्री लेयर जब प्रेशर प्रोवाइड करती है एंड नीचे से जो हमारे अर्थ के बॉटम में जो मैग्मा है वो हीट प्रोवाइड करती है, तो बीच में जो बनती है ना रॉक, उससे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. ओके गॉट इट. तो अभी तक हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा, इग्नियस रॉक्स के बारे में एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में. ओके एंड आई थिंक दैट मुझे इंडिया किंग ने एक आंसर बताया था इस फोर्थ क्वेश्चन का कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, नेम देम 2 टाइप्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. वेरी गुड इंडिया किंग, गुड, दिस आंसर इज करेक्ट. सो अभी 3 आंसर्स आर स्टिल लेफ्ट, लेट्स सी कौन आंसर करता है उनको. ओके या सो नाउ अभी हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स भी पढ़ लिए, राइट? So now we are going to just summarize this all and अभी हम सारी rocks को एक बार summarize करेंगे. So igneous rock form होती है जब लावा या मैग्मा कूल होता है. लावा होता है जो बाहर फ्लो होती है एंड मैग्मा होती है जो अंदर होती है, यानी कि जो मैग्मा होती है वो अंदर होती है. सपोज दिस इज अर्थ सरफेस, या सो अभी I'm trying to draw something. Yeah. So here अभी I'm trying to draw volcano जिससे आपको समझ आ जाए actually, right? So in this picture you can see जो हमारे earth surface के नीचे yes Selena, I'm repeating the question. See, the questions are that previous class में मैंने समझाया था कि why all ores are minerals but all minerals are not ores. So आपको इसका आंसर देना. एंड सेकंड इज दैट एनी प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल, जैसे मैंने आपको रॉक्स की एंड मिनरल्स की प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे रॉक्स आर एक्चुअली डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, है ना, मैंने आपको बताया था ना. सो यू नीड टू टेल एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स कि लाइक वो कैसे पाए जाते हैं, है ना, वो कहाँ पे माइनिंग होती है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द केमिकल कॉम्पोजिशन मींस रॉक्स और मिनरल्स व्हाट. मैंने आपको 1 या 2 वर्ड्स में बताया था. मैंने आपको केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बताया था. केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, इफ यू हैव अटेंडेड द प्रीवियस सेशन. तो मैंने आपको केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब बताया था कि मींस व्हाट. ठीक है, तो आपको इसमें आपको वो आंसर बताना है कि मींस व्हाट. इन योर ओन वर्ड्स यू कैन टेल, बट 1 या 2 वर्ड्स में. ओके. So for fourth question, India King has already answered how many types of minerals. Now the 3 questions are remaining. Why all minerals are why all ores are minerals but all minerals are not ores, and any one property of mineral and chemical composition means. Okay. Yeah. So now we are going to summarize again what I was telling is that yeah. So जो अंदर की जो अंदर होता है, as you know that हमारे हाँ ओके अलीना, यस, मिनरल की एक प्रॉपर्टी है दैट दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया. केमिकल कंपोजिशन का मतलब एंड ओर्स, बाय ऑल ओर्स आर मिनरल्स एंड ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. ओके, ये 2 क्वेश्चन बचे अभी. या सो एज यू नो दैट जो हमारे अर्थ के अंदर जो वो होती है उसको मैग्मा कहते हैं, राइट? एंड यही मैग्मा जब ऊपर आती है तो वो लावा बन जाती है, राइट? सो ये होती है लावा एंड दिस वन इज मैग्मा, है ना. सो जब इग्नियस रॉक फॉर्म्ड होते हैं जब लावा या मैग्मा कूल होता है, यानी कि जब ये जो लावा जब ये कूल हो जाती है, हमारी साइड के कोई स्टोन कुछ अलग मिनरल से इन कांटेक्ट में आ जाती है तो वो कूल हो जाती है, राइट? तो वो कूल होती है तो वो रॉक फॉर्म करती है एंड वो जो रॉक्स होती है वो इग्नियस रॉक्स होती है. ओके, इग्नियस रॉक के 3 टाइप्स है, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव एंड प्लूटोनिक. प्लूटोनिक आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव रॉक्स होती है जब, इंट्रूसिव मींस इंटीरियर का, जब मैग्मा कूल होती है तो वो इंट्रूसिव रॉक्स हो जाती है. एंड जब एक्सट्रूसिव यानी कि जब बाहर का एक्सटीरियर पार्ट, है ना, तो जब एक्सट्रूसिव यानी कि लावा कूल होती है, एक्सट्रूसिव यानी कि जब लावा कूल होती है तो हम उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. एंड जब
क्रोनिक एक्सट्रूसिव रॉक ही है, बट उसका थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा, उसमें टाइम ज्यादा लगता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट इग्नियस रॉक्स. एंड नाउ वी कम अप टू मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती है जब जो सेडिमेंट होता है, एयर, पेबल्स, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो उनका ये सारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, सॉरी, ये जब एक साथ सेटल डाउन हो जाते हैं हमारे अर्थ के बॉटम में, तो वो है ना लेयर्स फॉर्म करते हैं, वो डिपोजिट हो जाते हैं, है ना. बहुत साल बाद वो ऐसा डिपोजिट हो जाते हैं. जो ये रॉक्स होती है इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. ओके, सो जो रॉक्स जो फॉर्म होती है जब सेडिमेंट डिपोजिट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. ओके, गॉट इट अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स. आपको समझ आया व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स? हैव यू गॉट इट और नॉट? यस सर. Have you got it? Okay, Alina. Thank you, triggered insan. Yeah. So, igneous rocks हमने पढ़ ली, सेडिमेंट्री रॉक्स. अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है कि जब एज यू नो कि ऊपर से हमारा सेडिमेंट्री, सपोज आपने अपने 2 पाम्स लिए एंड आपने अपना एक पाम को अपने दूसरे पाम के ऊपर रखा है. ओके, तो जो आपका नीचे वाले पाम है उसको प्रेशर मिलेगा ऊपर वाले पाम से, राइट? बिकॉज उसका थोड़ा तो लोड हो गई, सो दैट इज उसको प्रेशर मिलेगा. ओके, तो सेडिमेंट्री जो ऊपर की जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो नीचे की सेडिमेंट्री रॉक्स को प्रेशर प्रोवाइड करती है, राइट? यस है ना? या. एंड नीचे एज यू नो दैट हमारे अर्थ के नीचे है मैग्मा. ओके, इंटीरियर पार्ट क्या है? मैग्मा. तो नीचे से हीट आ रही है एंड ऊपर से प्रेशर आ रहा है. तो जो रॉक्स जो फॉर्म होती है जब ऊपर से उन्हें प्रेशर मिलता है एंड नीचे से हीट मिलती है, okay, that particular rock is called metamorphic rock. See, heat from magma, okay, and pressure from above sedimentary layers. Okay, yeah. So have you got what is types of rock? So हमारे 3 types of rocks होती है, igneous, sedimentary and metamorphic, right? Yeah. So now we come up to the non-metallic minerals. अभी हमने मेटालिक मिनरल्स पढ़े थे, अभी हम नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. हमने एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते कि हमने मेटालिक मिनरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज देम. ओके, हमने पढ़ा था कि मेटालिक मिनरल्स का वो मेटालिक मिनरल्स मेटल कंटेन करते हैं, यानी कि मेटालिक एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, एंड दे आर फाउंड एज ओर, यानी कि वो रॉक्स में पाए जाते हैं. ओके, रॉक्स जिनमें सबसे ज्यादा वो पाए जाते हैं. ओके, सो दे आर फाउंड एज ओर्स एंड हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सो इट इज वेरी इजी. जो मेटालिक है उनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो मेटल्स है सपोज आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो उन और मेटालिक मिनरल्स में उन्हीं की प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि वो लस्ट्रस होंगे, मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, राइट? एंड दे आर फाउंड मोस्टली इन मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक. इग्नियस हमने पढ़ी व्हेन लावा मैग्मा कूल्स. मेटामॉर्फिक भी पढ़ी जिनको ऊपर से सेडिमेंट्री लेयर से प्रेशर मिलता है, नीचे से हीट मिलती है. सो दे आर मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, एंड जो मेटालिक मिनरल्स है ये 2 टाइप के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस. आपको डू यू नो, हैव यू एवर स्टडीड केमिस्ट्री? तो आपने पढ़ा होगा, इफ यू हैव स्टडीड केमिस्ट्री, about the symbols and the elements, that आपने पढ़ा होगा. जो आयरन है, this iron is actually, this आयरन का सिंबल होता है Fe. You might have studied it. फेरस. ओके, इसको हम लोग ग्रीक वर्ड में कहते हैं फेरस. ओके, फेरस आयरन को हम ग्रीक वर्ड में कहते हैं फेरस एंड इसका सिंबल Fe होता है. ओके, सो ये जो मेटालिक मिनरल्स है इसके 2 टाइप्स होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस. मतलब एक में आयरन पाया जाता है, एक में आयरन नहीं पाया जाता. ओके, तो जो फेरस मिनरल्स होते हैं दे एक्चुअली कंटेन आयरन, एग्जांपल आर दीज, एंड जो नॉन फेरस होते हैं दे डू नॉट कंटेन आयरन. ओके, एंड देयर एग्जांपल्स आर gold, silver, etc. Okay, now we have come upon non-metallic minerals. ठीक है,
सो जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स कंटेन करते हैं, एज सिंपल एज इट इज. नॉन मेटालिक मिनरल्स कंटेन दी नॉन मेटल्स, राइट? And they have properties of non-metals. Obviously, if metals are having if metallic minerals are having properties of metals, then non-metallic minerals will be having the properties of non-metals. Means, as you know that जो minerals होते हैं वो एलिमेंट से बनता है, ठीक है? तो अब जो मेटालिक मिनरल्स है उनमें मेटालिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होगी, एंड जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है उनमें नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होगी, राइट? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ देम, राइट? हाँ, एंड इनकी प्रॉपर्टीज होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, डोंट हैव लस्टर, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो. ये नहीं कि सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, सारे डक्टाइल नहीं होते, सारे मेलिएबल, सारे नॉन मेलिएबल होते हैं. देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक ग्रेफाइट, ओके, देयर आर सम एक्सेप्शंस, ओके, सारे ऐसे नहीं होते. So now we are going to learn that coal and petroleum are called mineral fuels. Yeah, so we are going to learn about what are fuels, what are the types of fuels also. But अभी हम लोग वो नहीं करेंगे. We will learn them in our next session. Okay? अभी हम लोग पढ़ेंगे कि coal and petroleum are called mineral fuels. ओके, ये कुछ मिनरल फ्यूल्स कहते हैं. क्यों कहते हैं? पेट्रोलियम तो चलो आपने शायद पढ़ा भी हो, बिकॉज पेट्रोलियम मतलब मोटर, एक्चुअली पेट्रोलियम ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, वो कार्स, व्हीकल्स को रन करने में हेल्प करता है, राइट? बट आपने कोल का कभी सुना कि कोल क्यों मिनरल फ्यूल है? दैट टुडे वी विल डिस्कस दैट. Okay, and the fourth property and the fourth point of non-metallic minerals is that वो sedimentary rocks में पाए जाते हैं. Okay, so हमने पढ़ा था कि metallic minerals igneous and metamorphic में पाए जाते हैं, okay, and non-metallic sedimentary rocks में पाए जाते हैं, यानी कि this one, okay. Yeah, so now we are going to know that why coal is called mineral fuel. How is coal actually helping us as mineral fuel? Okay, yeah. So this is actually a diagram in which I will explain you कि how is coal helping us in running electricity. Okay, कोल हमें इलेक्ट्रिसिटी रन करने में हेल्प करता है, जैसे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हम व्हीकल्स को रन करने में हेल्प करते हैं, तो कोल इलेक्ट्रिसिटी को रन करने में हेल्प करता है. हाउ दैट अभी हम लोग वो जानेंगे. ओके, तो अभी दिस पॉइंट इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको इसे बड़े ही ध्यान से सुनना है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने पल्वराइज कोल लिया, यानी कि powdered coal. Yeah, we have taken the powdered coal, and from here the air is coming, right? So ये एक प्रोसेस होता है combustion. Okay, combustion में क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर मिनरल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हीट देता है. So combustion is a chemical process in which substance reacts rapidly with oxygen and gives off heat. यानी कि जब कोई पर्टिकुलर केमिकल कोई पर्टिकुलर मिनरल एयर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हीट देता है, यानी कि वो हीट देता है, यानी कि हीट देता है तो ऑब्वियसली फायर भी देता होगा. ओके, सो जब हीट देता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना आपको बस इतना पार्ट देखना है, ये इतना पार्ट. यहाँ पे हम लोगों ने पल्वराइज कोल यानी कि पाउडर कोल लिया, यहाँ पे एयर आ रही है, एंड यहाँ पे कंबशन के प्रोसेस की हेल्प से यहाँ पे आग जल रही है, बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ कंबशन. क्यों? क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर मिनरल, कोई पर्टिकुलर मिनरल जिनकी प्रॉपर्टीज होती है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आप हीट देते हैं. ओके, हीट और फायर देते हैं. तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ये बॉयलर कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ दिस पल्वराइज्ड कोल. तो यहाँ पे कोल ने हेल्प करी है. ओके, सो जब कंबशन का प्रोसेस होता है तो गैसेस निकलती है, एंड उन गैसेस को कहते हैं कंबशन गैसेस. ओके,
So these gases are actually stacked up. This stacked होती है. They are actually stacked up, and ये gases actually stacked up होती है, and they are called combustion gases. यानी कि जो gases which actually come out in the process of combustion are called combustion gases. तो आपको इतना पॉइंट समझ आया या नहीं? Got it or not? Have you got this कि मतलब कैसे कंबशन गैसेस निकली, क्यों निकली, कंबशन का प्रोसेस होता क्या है? कंबशन का प्रोसेस होता है जब एक पर्टिकुलर मिनरल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हीट देता है, वो फायर देता है. ओके, थैंक यू अलीना, थैंक यू सर. ओके, सो या एंड इट गिव्स आउट कंबशन गैसेस. तो अभी आपने इतना समझ लिया. अभी इधर से तो हम लोगों ने ये वाला पर्टिकुलर हमारा मेथड, ये जो कंबशन गैसेस होती है ये बड़ी यूजफुल होती है, वो हम लोग जानेंगे बाद में. ओके, अभी आप इधर से देखो, इधर से हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने कंटेनर लिया जिसमें हम लोगों ने वाटर लिया. अब ये जो वाटर है ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बॉयलर है, यानी कि ये हीट होगा, यानी कि वाटर जो है, वाटर को हीट मिली. जब वाटर को हीट मिली तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया. ओके, सो वाटर जो है हमारा वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, एंड जो स्टीम होती है, ये जो स्टीम है ये इस साइड जा रही है, एंड यहाँ पे टर्बाइन है, स्टीम टर्बाइन है ना. तो ये स्टीम टर्बाइन मतलब ये जब इसको स्टीम मिलेगी तो रोटेट हो जाएगा. ओके, तो जब आपने विंडमिल भी देखा होगा, जब विंडमिल विल फेस एक्चुअली, जब विंडमिल को इलेक्ट्रिसिटी जब विंडमिल को वो पर्टिकुलर थिंग मिल जाती है तो वो उसका जो टर्बाइन है वो रोटेट करता है. ठीक है, एंड वो जो टर्बाइन रोटेट करता है वो जनरेटर को रोटेट करता है. फिर जो जनरेटर को पावर देता है, जो जनरेटर है जिसको पावर मिल चुकी है वो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से विंडमिल वर्क करती है. यानी कि आपको समझा है, यानी कि इधर हम लोगों ने पहले तो हम लोगों ने वो अलग प्रोसेस था, अभी वो प्रोसेस भी हेल्प कर रहा है, लेकिन हमें बस इधर बॉइलिंग का ध्यान रखना है. तो हमने एक तरफ वाटर लिया, वाटर यहाँ से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकला, बॉयल हुआ बॉयलर की हेड से, एंड देन वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया. जो स्टीम है वो स्टीम टर्बाइन को रोटेट करेगी, यानी जो स्टीम टर्बाइन है वो रोटेट करके पावर प्रोड्यूस करेगी. ओके, तो पावर क्यों प्रोड्यूस करेगी? व्हाई विल इट प्रोड्यूस पावर? बिकॉज जो स्टीम है, बिकॉज स्टीम टर्बाइन पावर इसलिए प्रोड्यूस करेगी क्योंकि इससे स्टीम मिल गई, एंड जब ये रोटेट होता है तो जल्दी जल्दी रोटेट होती है, भागता है, रोटेट होता है, फिर ये पावर प्रोड्यूस करता है, एंड वो पावर जनरेटर को रन करने में हेल्प करती है. जब जनरेटर रन हो जाता है तब तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, एंड दस कोल एक्चुअली गिव्स अस इलेक्ट्रिसिटी. सो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्या आपको समझ आया या नहीं आया? बिकॉज दिस प्रोसेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो आपको आना चाहिए. वैसे दिस इज एक्चुअली आप इसको 8th या 9th में पढ़ते हैं, बट इफ यू आर नोइंग इट नाउ इन 6th और 7th grade, then that is very good. ओके, कना गॉट इट, थैंक यू सो मच. ओके, सो यानी कि जो पल्वराइज कॉल है वो एयर के साथ रिएक्ट होकर उसने बॉइलिंग करा, बॉइलिंग एक्चुअली उसने बॉयलर को प्रोड्यूस करा, क्योंकि कंबशन एक प्रोसेस है जब एक पर्टिकुलर चीज एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो हीट और फायर देती है. ओके, तो ये जो इसको बॉयलर को है ना, ये बॉयलर हमें मिल गया, इसकी वजह से पल्वराइज कॉल और एयर की वजह से फिर ये जो कंबशन का प्रोसेस है ये हीट दे, ये कंबशन गैसेस प्रोड्यूस करता है, विच हम उसका भी यूज नहीं पढ़ेंगे. ओके, तो कंबशन गैसेस आर आल्सो यूजफुल. तो कंबशन गैसेस प्रोड्यूस करता है, एंड दूसरी तरफ हम लोगों ने वाटर लिया, वाटर जब इस साइड से जाएगा तो वो बॉयलर की हेल्प से बॉयल हो जाएगा. ओके, एंड वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, जो स्टीम होती है वो स्टीम टर्बाइन की मदद से स्टीम टर्बाइन होती है, वो स्टीम की मदद से रोटेट होगी. मींस जब तक स्टीम टर्बाइन को स्टीम नहीं मिलेगी इट विल नॉट रोटेट. तो जैसे ही उसको स्टीम मिली इट विल रोटेट, एंड जब कोई चीज बहुत तेज से रोटेट करेगी इट विल रोटेट एट द वेरी फास्ट स्पीड, तो वो पावर देगी. ओके, पावर, एंड वो पावर जनरेटर को रन करने में हेल्प करेगा, एंड जनरेटर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, have you got this?
आपको समझ आया कैसे वर्क करा? Yeah. So this is how. This is why coal is called. Coal is actually helping us, and it is called mineral fuel. हम आगे फ्यूल के बारे में जानेंगे कि what are fuels, what are the types of fuels, but उसके लिए आपको हमारी next sessions को attend करना होगा. Okay, and now that is all for today. अभी हम और discuss नहीं करेंगे. I will just tell the answer. So let me see. Alina ने भी solve कर दिया था one question. Okay, and that is absolutely correct. Yeah. So why all ores are minerals? मैंने आपको explain करा था कि why all ores are minerals but all minerals are not ores. Just because क्योंकि देखो जो ores है वो rocks है और rocks किससे बनते हैं? मिनरल से. तो भाई अब कोई ore है वो बिना मिनरल के तो बन नहीं सकता. बिना जो रॉक है वो बिना मिनरल के तो बन नहीं सकती. That is why all ores are minerals. क्योंकि जितनी भी रॉक्स है वो सारी मिनरल से बनी होंगी. राइट है ना? एंड अभी ये वाली बात ऑल मिनरल्स आर नॉट. और जरूरी नहीं है कि सारे मिनरल्स हो जाओ. अगर वो मिनरल डिपोजिट नहीं हुए हैं तो वो ओर्स नहीं होंगे. समझ आया? अगर वो मिनरल डिपोजिट नहीं हुए तो वो ओर्स कहाँ से होंगे? राइट. सो इसका आंसर ये है because rocks are made up of mineral. That is why all ores will contain rocks. But it is not possible, it is not compulsory that all minerals get deposit and form ores. Okay, आपको समझ आया? Have you got this one? Yeah. So now let's come up to here. ये हमारा next question था कि state any one property of minerals. So हमने पढ़ा था, अलीना ने भी कहा था. She has mentioned that they are unevenly distributed and they have impurities and they are exhaustible, means they cannot be generated as easily. And आप ये भी बोल सकते थे कि minerals may or may not be commercially useful or it is mined only in those regions where it occurs as ores. Okay, minerals. आप ये भी बोल सकते थे minerals are non-living solid substances. I have told you all. Okay, so you can say any what you want. Okay, yeah. So the next question is that chemical composition means rocks or minerals. What? Chemical composition means rocks or minerals. Formation, उनका formation, वो किससे बना है, उनका formation. This is what chemical composition means. Okay, its answer is formation. You need to learn, you need to remember. This question can be asked from you. Okay, in Olympiad as well as in your exam. See? Chemical composition means what? आपको अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है. तो it means is rocks or minerals formation that like how much quantity of minerals are present in it or how much quantity of elements are present in it. Right? We have learned कि rocks में कितने minerals present है वो chemical composition of rock हो गया and mineral में कितने elements present है that is chemical composition of minerals. Right? Yes or no? Yes or no? Yes. And the fourth is how many types of minerals? This India King is answered. 2 types, metallic and non-metallic. Okay. So yeah. So that was it for today. Okay. And now we are going to now we are going to end this session. Hope you all enjoyed this session and you found it useful. Don't forget to share it among all your friends so that they can enjoy it too and they can also learn this interesting thing. Because आज हम लोगों ने कितनी सारी interesting things पढ़ी कि like what are actually ores है ना. हम लोगों ने chemical composition के बारे में, types of rocks and actually हम लोगों ने and yeah I want to actually so this is actually chapter for Sabzuari that her answer was correct. Okay, even Saksham's answer is correct. Okay, India King's answer is also correct. Okay, so thank you, Triggered Insan. Yeah, so this was it for today. Okay,
So आज हम लोगों ने काफी सारी चीज पढ़ी है, and the next session I will update. You need to subscribe my channel and also press the bell icon जिससे आपको मेरी next coming session की notification मिल जाए. Okay, you can watch the replay if you have joined late or you have missed any part. Okay, yeah. So thank you. Take care. Bye bye, all of you. Bye bye.